Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagishri. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter syllabus 2022 paper number 6 financial accounting. In that topic is NPO. So we have already solved illustration number 13 and 14. Now we will directly solve illustration number 18 because this is kind of simple question, and you will be able to understand the method of posting or recording the transactions regarding NPO. So I have skipped the question number 15, 16 and 17, and directly we are solving illustration number 18. I will cover those illustrations thereafter. Okay. So here illustration number 18, OB Library Society showed the following position on 31st March 2021. Okay, so this is the position regarding 31st March 2021. In that, liability, that is capital fund, and expense payable is given. Here electrical fittings, furniture, books, investment in securities, cash and bank balance. Okay, cash at a bank. So here cash in hand is given, and then receipt and payment account is given. Okay, now we will follow one method, that we will put at some ticks regarding the adjustment, so that we will record the items accordingly. So directly I'll tell you how to record. See, first of all, capital fund will go to the same as liability side, but inner side. Okay, so inner side because we are going to adjust surplus or deficit. So मैंने tick क्यों किया है, मुझे inner में लेना है. Okay, if you are doing a tick, then you have to write in inner side, otherwise you can write in outer side. Okay, now regarding this expense payable, see, whatever things are recorded twice, that is two effects are there, then that would be cancelled. See, expense payable 7,000, and here those expenses are paid during the year. See, outstanding expenses paid 7,000. It means here it is credit balance. Okay, here it is already paid. It means that effect is cancelled. Okay, it was liability at the beginning of the year. Okay, and here it is already paid. It means that liability is ended. So this will not be recorded. Okay, this will not be recorded. We are just discussing the question orally, so that we will solve it very fast. Now these are the assets. Now in this case, see, again cash and bank balance 25,000, and here cash in hand it is 25,000. Same figures are there. It means बैलेंस शीट में से रिसीट एंड पेमेंट में वही ओपनिंग बैलेंस में आया है. So same balance we will not record because both effects are given. So here we are not going to record. After that see, this cash and bank balance will also be not recorded. Okay, दोनों भी record नहीं होगा. अभी सिर्फ ये assets बचा है और capital fund हमको record करना है. ठीक है. Now here एंट्रेंस फी इज देयर, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इज देयर. नॉर्मली रिसिट्स मतलब इनकम, तो नॉर्मली ये जो आइटम है वो नॉर्मली इनकम में जाएंगे या फिर कभी कभी लाइबिलिटीज में जाएंगे. ओके, बट इसके बाद ये जो पेमेंट वाले आइटम हैं वो एक तो एक्सपेंडिचर में जाएंगे या फिर असेट्स में जाएंगे. ओके, सो हियर सेल्स प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड पेपर्स एंड एवरीथिंग इज ओके. नाउ हियर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पोस्टेज, हाँ, बट हियर बुक्स विल गो टू द असेट साइड. ओके, बाकी जो चीज़ें हैं वो एक्सपेंडिचर में जाएंगी. देन रेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अगेन असेट, सैलरी इज ओके. नाउ कैरिड डाउन बैलेंस वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन असेट साइड. ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, यहाँ पे अपने पास ओपनिंग बैलेंस दिया था और अपने पास क्लोजिंग बैलेंस है. वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली क्लोजिंग बैलेंस इन क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके, सो हियर इट इज गिवन. नाउ you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2022. It means current year is 21 and 22. ठीक है, बैलेंस शीट भी उसी दिन का है एंड एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है. मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस का मतलब है अपना सब्सक्रिप्शन ये साल के रिलेटेड नहीं है. ओके, सो बेसिकली वी हैव टू एडजस्ट दिस अमाउंट इन मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन. ओके, we will write the effect also. Advance मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, less, because this is not related to your current year. Okay, and we have received the subscription in advance but we have not given the services, so it will go to the liability side because this is a liability. Okay, now outstanding rent, that is 4,000 and salary is 3,000.
anything which is outstanding, normally we have to add it because that is related to that year. Now rent and salaries are expenses. Okay, तो expense मेरा pay करना बाकी है, it means it is liability. Okay, so here it will be added and liability side. Okay, so I will put a tick on rent and salaries. Okay, after that book to be depreciated 10% including additions. Okay, तो बुक्स को हमको क्या करना है, डेप्रिसिएट करना है. सी हियर बुक पे मैं 2 टिक करूँगी, एक डेप्रिसिएशन का और ये जो बुक हम लोग ने लिया है उसका ऐड करने के लिए. ठीक है, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी एक टिक होगा क्योंकि ये हमको क्या करना है, ऐड करना है. ओके, चलो देन electrical fittings and furniture are also to be depreciated at the same rate. Okay, so electrical fittings and furniture only one tick for depreciation. Okay, next 75% of entrance fee is to be capitalized. एंट्रेंस फी का 75% कैपिटलाइज करना है तो हमको टिक करना पड़ेगा. कैपिटलाइज मीन्स उसमें से 75% अमाउंट हमको कैपिटल फंड में डालना पड़ेगा. ठीक है, सो कैपिटल फंड पे 2 टिक आएंगी, एक सरप्लस वाला, एक एंट्रेंस फी वाला. ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टू बी कैलकुलेटेड 5% and including the purchases made on 1st October 2021, that is 40,000. Okay, so here this adjustment is regarding interest on securities, so I will put on interest on securities. Okay, I hope you are understanding that what I am doing. Basically मैं क्या कर रही हूँ, ये क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रही हूँ. इसका मतलब we are just analyzing that which items will be recorded inner side and which will be recorded on outer side. Okay, now recording will be very fast. See, capital fund, liability side only one item is there, capital fund, so we will write on liability side. Okay, capital fund amount is 7,93,000. Okay, 2 ticks are there. See, 2 ticks are there, it means 1 and 2 spaces I will leave. Okay, after that expense payable तो कट हुआ है क्योंकि वो डबल था. अभी असेट्स में फटाफट हम लोग टिक वाले जितने टिक है अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अमाउंट इज 1,50,000. एक टिक है, अंदर लिखो. उसके बाद फर्नीचर 50,000, एक टिक है, एक ही स्पेस छोड़ना है. देन बुक्स 2 टिक है, बुक्स 4 लाख, 2 टिक है, 2 स्पेस छोड़ना है. ठीक है, सी आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन securities only 1 tick is there. Interest adjustment is not related to this, that is totally independent adjustment regarding interest, so I am just putting 1 space. Okay, after that cash and bank, cash in hand is cancelled, so here my balance sheet is completed. Now receipt and payment account. ठीक है, तो रिसिट साइड जो होता है वो नॉर्मली सारा इनकम में जाता है, सो बैलेंस इज कैंसल बिकॉज दैट इज BD बैलेंस, रिपीटेड बैलेंस. ओके, हियर एंट्रेंस फी क्रेडिट में जाएगा. बेसिकली दिस इज योर एक्सपेंडिचर साइड and this is your income side. Okay, by mistake I have written particulars, I will cut it in the notes. Okay, entrance fee that is 30,000, inner only 1 tick is there, so 1 space I will leave. Okay, after that membership subscription, by membership subscription that is 2 lakh, only 1 space I require. After that there is no tick for these 2 items, so we will just record it on direct outer side. ठीक है, फटाफट by sales proceeds
of old papers, that is 1500 direct outer, then by hire of lecture hall, okay, that is 20,000. After that, interest on securities, we are having adjustment, so interest on securities 8,000 inner side because one tick is there, ठीक है. So here I have completed my receipt side also. Now payment side, okay. चलो, जहाँ पे टिक नहीं है आउटर में डालना है, जहाँ पे टिक है वो इनर में डालना है, ठीक है. तो मैं आपको फटाफट रिकॉर्ड करके देती हूँ, ठीक है. सबसे पहले टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, टिक नहीं है आउटर. देन टू postage and stationery, I am writing in short, that is I have to make a video in a short time period, so that's why I am writing in short, okay. Telephone charges 5,000. After that, book purchase is asset side, okay. So we are going to record that in your asset side. Book purchase asset side 60,000, okay. So we have purchased the book, so we have to add, okay. Purchased 60,000 add करना है, okay. So 4,60,000 will be the amount, ठीक है. चलो next, see this balance sheet, this receipt and payment, it is just like trading account. It means these items are having only one effect, not a two effect, so that's why I am recording only once. After that, next item is rent. See, rent 88,000, one tick is there, rent. After that, investment in securities, that is purchase, 40,000 का purchase हुआ है, तो again add होगा, add purchased 40,000. Now only one space was there, so direct amount we will record in outer side, that is 1,90,000, ठीक है. Next, salary, one tick is there, so inner 66,000. I hope you are getting me. Now balance carried down, cash and bank balance, asset side only one effect, okay. So cash at a bank, cash in hand, only CD balance we have to record, not a BD balance in closing balance sheet, okay. After some question we are going to learn how to open the opening balance sheet, but now this is a simple basic question, ठीक है. So here I have completed my receipt and payment account also. Now फटाफट we will do the adjustments, effects already written and explained, so I will do like that. Membership fees include 10,000 received in advance, less and liability, okay. So membership fee में से क्या होगा, less, advance, because this is not related to this year, okay. So 10,000 advance less होगा, एक ही जगह था, मतलब स्पेस था, तो डायरेक्ट आउटर. Here adjustments we are doing, so two effects we have to record. Here less हो गया है, अभी लाइबिलिटी में आएंगे. एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 डायरेक्ट आउटर, ठीक है, नो एडजस्टमेंट. नाउ नेक्स्ट, दो इफेक्ट हो गया है. प्रोवाइडिंग दैट द आउटस्टैंडिंग रेंट एंड सैलरी, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है और ये एक्सपेंसेस है, तो लाइबिलिटी बनेगी, लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है. चलो, तो रेंट में 4,000 ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 4,000, आउटर में जाएगा जो भी आपका टोटल आएगा 92,000, एंड सैलरी में आउटस्टैंडिंग ऐड होगा 3,000, ठीक है. सो आउटर में इट इज 69,000. तो दोनों का अभी मैं एक साथ इफेक्ट दे रही हूँ पीछे लाइबिलिटी साइड में. आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज
3000. I hope you are getting me. These are very basic adjustments. After that ये देखो डेप्रिसिएशन दिया है बुक्स का 10% इंक्लूडिंग एडिशंस. एडिशंस कब किया था? अप्रैल में, मतलब फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा बेसिकली. सो डायरेक्टली 10% वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. लेस डेप्रिसिएशन हमेशा लेस होता है. डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%. ओके, सो 10% कितना आएगा? 46,000. ओके, 4,60,000 इंटू 10% माइनस करेंगे तो 4,14,000. इमीडिएटली आपको सेकेंड इफेक्ट देना है वरना आप भूल जाओगे. ठीक है, चलो. तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है? डेबिट में. दैट इज एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 46,000. डन. आफ्टर दैट नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड फर्नीचर, दोनों पे भी आपको 10% निकालना है. ठीक है, चलो. लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 15,000. सो आउटर में 1,35,000. ठीक है, हियर लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, दैट इज 5,000. आउटर में 45,000. ठीक है, दोनों का इफेक्ट देना है 15,000 एंड 5,000. टू डेप्रिसिएशन ऑन इलेक्ट्रिक फिटिंग्स 15,000. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000. ओके, चलो. एडजस्टमेंट नंबर सी तक हो गया है. अभी 75% ऑफ एंट्रेंस फी इज टू बी कैपिटलाइज. ओके, एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, मतलब आपको कैपिटल फंड में डालना है. ठीक है, कैपिटलाइज 75% कैपिटलाइज होगा इंटू 75%. 22,500 कैपिटलाइज होगा तो बैलेंस बाहर आएगा आउटर. ठीक है, कैपिटलाइज मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट हमको देना है कैपिटल फंड में ऐड करके. ऐड एंट्रेंस फीस. ये अगर कैपिटलाइज करने के लिए बोला है तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करना है. ओके, सो इफ इंस्ट्रक्शन इज गिवन रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन देन ओनली यू हैव टू डू, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू डू द कैपिटलाइजेशन बाय योर ओन. ठीक है. Now, last adjustment, the interest on securities is to be calculated at the rate of 5% per annum, including purchases made on 1st October 2021. Okay, so basically इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में आपको ये दिया है कैलकुलेशंस या फिर इंफॉर्मेशन दिया है. सिक्योरिटीज़ देखो 1,50,000 का ओल्ड है एंड 40,000 का न्यू है, तो दोनों का हमको सेपरेट कैलकुलेट करना है. ओके, सी टोटल सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इज 1,90,000. ओके, उसमें दो पार्ट है, 1,50,000 ओल्ड एंड 40,000 न्यू. ओके, ओल्ड पे आपका जो भी परसेंटेज है 5% पूरा आएगा. ओके, सो 1,50,000 इंटू 5%, इट इज़ ₹7,500 एज अ इंटरेस्ट. ओके, एंड हियर this 40,000 securities are purchased in October. So October, November, December, January, February, March, only 6 months are there. Okay, so 40,000 multiplied by 5%, this is for the entire year. Okay, so we want only for 6 months, so 6 से multiply, 12 से divide, that is 1,000. So 1,000 interest is there. Total interest should be 8,500. Okay, टोटल इंटरेस्ट हम लोग को आना चाहिए था 8,500. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ देखो कितना आया है. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ कितना आया है? सिर्फ 8,000. ओके, इट मीन्स वी आर गोइंग टू रिसीव, मतलब वी हैव टू रिसीव 8,500 बट वी हैव रिसीव्ड 8,000. ओके, सो आउटस्टैंडिंग कितना है, बाकी कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज 500. सो टोटल शुड बी 8,500. I hope you are understanding this. So we have calculated first of all interest on securities. Total amount should be 8,500. We have received only 8,000, so 500 is outstanding. So we have to record this 500 on asset side.
because this is an income we are going to receive in future. Okay, so that's why this is we will record on asset side. Outstanding interest on securities, that is 500. Okay, now all the adjustments we have covered. See, everything is done. Now we will go for closing the accounts. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल लेना है आपको, कौन सा बड़ा साइड है वो देखना है. ठीक है, so here I have taken the total. Debit side is more, that is 2,44,200. okay, I have already told you whenever debit side is more, it means expenses are more than the income. Okay, so I have taken the total of expenses. Now we will deduct the income. Okay, so income, if we deduct all the amounts of income, then we will get a amount that is 16,700. okay, this is nothing but a loss, but this loss called as deficit. Okay, this is balancing figure, and whenever we are getting deficit, we have to deduct from your capital fund. Okay, less, so less deficit 16,700, total is 8,15,500 minus 16,700, we are getting final amount of capital fund, that is 7,98,800. 7,98,800. So now we are going to tally the balance sheet. First of all, we will take a total of liability side, 7,98,800 plus 10,000 plus 4,000 plus 3,000, that is 8,15,800. Now we will take the total of asset side, 1,31,000, 45,000, 4,14,000, 1,90,000, 20,000, 11,300 and 500. So here we are getting same amount, that is 8,15,800. okay, so here we have completed this illustration number 18. This was very basic question, but after that we are going to learn how to prepare receipt and payment account, opening balance sheet, etc. So this was the very basic question. Refer this question so that you will understand the next concept. So here we have completed illustration number 18, and while recording the videos I am using the color pen, but that is just for presentation purpose. You need not to use these pens in the exam, so you have to use only one color. So I am just using for presentation purpose. One color pen is only allowed in exam. So here we have completed illustration number 18. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics, and also join the Telegram group so that you will get the notes regarding your topics. Thanks for watching, friends.